Students, now I want to discuss problem number 10. Problem number 10 is very important for long question. 0 to pi by 2, 2 log sine x minus log sine 2x dx. It will be 0 to pi by 2, twice log sine x minus log sine 2x dx. Now, we here expand sine 2x by writing 2 sine x into cos x. Now what do we observe? We observe that it will be 2 log sine 2x minus log sine x minus log cos x minus log 2 m into n into p. Log m into n into p is equal to log m plus log n plus log p. This formula we here apply. So after simplifying, it will be log sine x minus log cos x minus log 2 dx. This is equation first. We know that 0 to a f x dx is equal to 0 to a f a minus x dx. So we again apply this formula. 0 to pi by 2 log sine pi by 2 minus x minus 0 to minus log cos pi by 2 minus x minus log 2 dx. And after solving, it will be 0 to pi by 2 log cos x minus log sin x minus log 2 dx. And adding this equation first and second, we have 2i is equal to 0 to pi by 2 minus log 2 minus log 2. ये वाला माइनस log 2 और ये वाला माइनस log 2. यहाँ log sin x, ये log sin x कट गया. Here is log cos x, here is also log cos. So after adding these two equations, we have 2i is equal to 0 to pi by 2 minus log 2 minus log 2 dx. 2i is equal to minus 2 log 2 0 to pi by 2 1 into dx. So my dear students, pi is equal to pi by 2 minus log 2, and that is pi by 2 log half, and I is equal to pi by 2 log half is the answer. This problem number 16 is very important for long question, my dear students. Let I is equal to 0 to pi log 1 plus cos dx. And here we apply the formula 0 to a f x dx is equal to 0 to a f a minus x dx. This formula is very important. मैंने आपसे पहले ही शेयर किया कि एनसीईआरटी का पूरा सवाल या डिफरेंट इंटीग्रेशन का मैक्सिमम सवाल 0 to a f x dx is equal to 0 to a f minus x dx के प्रॉपर्टी से बन जाएगा. प्रिय विद्यार्थियों, 0 to pi log 1 plus cos pi by 2 minus x dx, and I is equal to 0 to pi log 1 minus cos x dx. And adding first and second, we have 2i is equal to 0 to pi log 1 plus sin x into log 1 minus cos x. Log m plus log n is equal to log m into n. So it will log 1 minus cos square x dx. So it will be log sin square x dx. So adding first and second, we have 0 to pi log sin square x dx. Now my dear students, here I is equal to 0 to pi log sin square x dx. This is 2i, not I. Now 2 goes out, final I is equal to 0 to pi log sin x dx. Again applying this formula, फिर हमको ये फार्मूला अपनाना होगा और इसमें थोड़ा सा और कुछ काम करना है. पाई कैन बी रिटन एज 2 into pi by 2. 2 into pi by 2. See this formula. 0 to 2f x dx is equal to 0 when f 2a minus x is equal to minus f x. And 2 times of 0 to f x dx when f 2a minus x is equal to f x. So I is equal to 0, 2 into pi by 2 log sine 2 into pi by 2 minus x dx. It will be twice 0 to pi by 2 log sin x dx. Again applying property 0 to a f x dx is equal to 0 to a f a minus x dx. We have I is equal to twice 0 to pi by 2 log cos x dx. My dear students, here we 0 to 2a, ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया. 0 to 2a, a is what here? Pi by 2. So 0 to 2a
इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स डी एक्स, वैन कब एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। यहाँ भी 0 to 2a log sin 2 into pi by 2 minus x dx इक्वल टू ट्वाइस 0 to pi by 2 log sin x dx। Now again applying this formula 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f minus x dx। इसमें फिर से ये फार्मूला अपनाए सवाल बनाने के लिए, तो क्या हुआ 0 to pi by 2 log cos dx। So adding 4 and 5 we have, again ये लंबा सवाल है, adding 4 and 5 2i इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x dx। I इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x and do here arrangement। सवाल बनाने के लिए log 2 से जोड़े, log 2 से घटा दिए, तो ये क्या हो गया log 2 sin x into cos x, यहाँ से यहाँ तक माइनस log 2 dx, and it will be log sin 2x dx minus pi by 2 log 2 dx। Let 2x equal to t, तो 2x equal to 2 dx dt। When x equal to 0, t equal to 0। When x equal to pi by 2, t equal to pi, not pi by 2। So my dear student, now this expression becomes 1 by 2 0 to pi log sin t dt minus log 2 0 to pi by 2 dx, 0 to pi by 2 dx। So now what do we observe? We observe that here limit change when x is equal to pi by 2, t is equal to pi, t is equal to pi, so upper limit pi, lower limit no change। So it will be here looks like original integration, so it will be I is equal to I by 2 minus log 2 pi by 2। So it will be I by 2 minus log 2 pi by 2, so it will be I minus pi by 2 into 2 log 2, so I is equal to minus pi log 2। प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल के लिए मेरा सजेशन होगा, इस सवाल से एनसीईआरटी का कई एक सवाल जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको अच्छे से बनाइए, समझ बूझ के बनाइए, बार बार वीडियो देखिए, हो सके तो 4-5 बार बनाइए ताकि इसकी समझ आपको हो सके। माय डियर स्टूडेंट, इस सवाल पर आधारित एनसीईआरटी में सवाल बना हुआ है, एग्जाम्पल 26 पेज 36 सेकेंड पार्ट, इसको आप बनाइए। कौन सवाल है? 0 to pi by 2 log sin x dx और 0 to pi by 2 log cos dx, दोनों का आंसर एक ही होगा। एनसीईआरटी में यही है, आप इसको भी बना लीजिएगा, ये होमवर्क रहा। प्रिय विद्यार्थियों, नो आई वांट टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 19 सो दैट 0 to a f x g x dx इक्वल टू 2 times 0 to a f x dx। If f and g are defined as f x equal to f a minus x and जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। ये विद्यार्थी ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने से लड़का भड़क जाएगा, बिकॉज इट इज इन जनरल फॉर्म। लेट आई इक्वल टू 0 to a f x g x dx। नाउ आफ्टर अप्लाइंग दिस फार्मूला 0 to a f a minus x g a minus x dx। नाउ f a minus x equal to f x, but g a minus x equal to what is given? Gx plus Ga minus x is equal to 4. So you write it only G of A minus x dx. Adding first and second, we have fx plus gx plus fx plus Ga minus x dx. By taking common fx, we have gx Ga minus x. प्रिय विद्यार्थियों, gx plus Ga minus x is equal to 4. So we put fx into 4 dx. fx into 4 dx. And now 2i is equal to 0 to a fx into 4 dx. So what you have to prove? We have to prove 0 to a fx gx dx is equal to 2 times of 0 to a fx dx. So after cancelling this 2, I is equal to 2 times of 0 to a fx dx. Here is 4. So dividing both sides by 2, we have I is equal to 0 to a fx into 2 dx, that is 2 times of 0 to a fx dx. We can prove it.
Now there are multiple type of question here in this problem, and you have to solve it. Minus problem number 20, minus pi by 2 to pi by 2 x cube x cos x 10 to the power 5x plus 1 into dx. There are 4 ऑप्शन. तो फर्स्ट हमको यहाँ देखेंगे, ये इवन ऑड वाला सवाल है. चूँकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट एक जैसा है, साइन केवल बदला हुआ है. प्रिय विद्यार्थियों, वी मेक इट सेपरेट. माइनस पाई बाई 2 to pi by 2 x cube dx, minus pi by 2 to pi by 2 x into cos x dx, minus pi by 2 to pi to 10 to the power 5x dx, and minus pi by 2 to pi by 2 dx. Applying formula minus a to a fx dx is equal to 0 when fx is even, and twice 0 to a fx dx when fx is odd. Minus a to a fx dx is equal to 0 when fx is yes, my dear student, we apply the formula minus a to a fx dx is equal to 0 when fx is odd, and twice 0 to fx dx when fx is even. So this is odd function x cube. This is also x is also odd, and cos x is even into odd, plus into minus, that is finally odd function. It is also odd function, and it is even function. So now it is odd, so 0 0 0 1 into dx. कोई यदि प्रॉपर्टी से नहीं बनाएंगे तो dx का इंटीग्रेशन x, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, so pi by 2 plus pi by 2, that is 2 pi. So it is also even function, and if you will not apply this even, then you will write minus pi by 2 to pi by 2, 1 into dx का इंटीग्रेशन dx का x. So in this way we have answer is pi. So option C is correct. Option C is correct. ये विद्यार्थियों, आप इस सवाल को जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. हो सकता है हूबहू यही क्वेश्चन पूछ दे. The value of 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x dx is 2. 3 by 4, 0, minus 2. यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है. ये सवाल को हम कैसे बनाएंगे? मैंने आपको पहले ही कहा है 0 to a f x dx is equal to 0 to a f a minus x dx से बहुत सारा सवाल बन जाएगा. लगाइए इस फार्मूला. Suppose this is 1, and you apply this formula. तो we have 0 to pi by 2 log 4 3 cos x plus 4 plus 3 sin x. After applying this formula, 3 sin pi by 2 minus x, so 3 cos x, 3 cos pi by 2 minus x, so 3 sin x. Adding these two, 2i is equal to 0 pi by 2. This is log m plus log n. We know that log m plus log n is equal to log m into n. So it will be log 4 plus 3 sin x divided by 4 plus 3 cos x into 4 plus 3 cos x divided by 4 plus 3 sin x. दोनों कट गया. तो 0 to pi by 2 log 1 into dx, and it will be 0 to pi by 2 0 dx log the value of log 1. You write it out. The value of log 1 is 0. तो ये यहाँ 0 into dx, that is 0. So option C is correct. Option C is correct. प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हम डिफिनिट इंटीग्रेशन के बहुत सारे सवाल को, प्राय 99% सवाल का एक्सरसाइज को बनाया. डिफरेंट टाइप के सवाल को डिस्कस किए, और अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल डिफिनिट और इनडिफिनिट का नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे. आशा है इस तरह से यदि आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे. मैं जो सवाल बना रहा हूँ, सवाल भेज रहा हूँ, इसको बार बार बनाइए, बार बार पढ़िए, इससे कई एक सवाल बनेगा. थैंक यू वेरी मच.